on the way. Okay. Oxygen gas. Next one. मैम आपने वो लास्ट पॉइंट का बोला था कलरलेस के बाद कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल, हाँ आपके यहाँ पे बुक में दिया है बर्निंग स्टूडेंट स्प्रिंटर इज एक्सटिंग्विश्ड इन बर्निंग It does not support, but it burns itself. Yes, burns. In textbook, in the column of observation identification, one point it is given. It is very important because whatever properties hydrogen or any other gas they are showing, those properties we are focusing. In this book it is given burning wooden splinter is dash extinguished in hydrogen. Okay, so it does not support burning but it burns it. ये important point है, इसको स्टार बना के रखो. बैग उसको बीच में रखने बोल और उसको कॉर्नर पे आने और उसको कॉर्नर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, मतलब कॉर्नर किसको बोलते हैं. हो गया. देन नेक्स्ट वन ऑक्सीजन. हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन ओवर. और नेक्स्ट सेकंड वन ऑक्सीजन. नहीं वो मैंने स्टार्ट जस्ट किया था बट मैंने पूरा चालू भी नहीं किया, उसको फेल हो गया था. सेकंड वन इट इज हाइड्रोजन गैस. ओके, now again for second one it is oxygen gas. First we need to prepare it. First preparation and then identification. So now you tell me how you can prepare oxygen gas. How it can be prepared? आपने पूरा almost full syllabus is completed. Yes ma'am. You have already studied under metal topics. Photosynthesis. आपके से एडजस्टमेंट ना लगा देने से वीडियो इज वेरी ओके. वो देखो क्लोज दैट बुक, क्लोज इट. टेक्स्ट बुक अपना क्लोज करो. राइट डाउन मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड फर्स्ट कॉलम में लिखो अंडर ऑक्सीजन. This is preparation. आप ऊपर लिख के रखो. हाँ यहाँ पे preparation, metal oxide और metal nitrate, metal oxide और metal nitrate. Put arrow. On arrow show triangle. Triangle means heating, decomposition. So either you have metal oxide or metal nitrate. Metal oxides are formula for metal oxide. The simple metal oxide MO बराबर metal nitrates M with NO3. Okay, depending on the valency of nitrogen, depending on valency of metal, you can have it 2. जैसा valency रहेगा उसके हिसाब से, but nitrate is NO3. So write down first one. Pb3O4. You have to write down decomposition reaction for metal oxide and metal nitrate. Make it link it you serially complete this reaction. This all reactions are under preparation of oxygen. ऊपर heading डाल के रखो. Pb3O4 first reaction. Write down decomposition of this one. Then second one Pb3O4. Breaking. You are preparing oxygen gas, so complete breaking. Plus वहाँ पे हमने इन वर्ड्स लिखा है ना, वॉइस.
In words we have written metal oxide or metal, टाइम वेस्ट मत करना मेरा, हाँ, metal nitrates on decomposition. Okay, on decomposition there will be formation of oxygen. Your main requirement of the reaction is oxygen. Now depending on oxide, nitrite which you have used, here you have to write down the byproduct. Okay, मैं आपको अभी एग्जांपल दे रही हूँ ऑक्साइड और नाइट्राइट का. वन बाय वन कंप्लीट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फर्स्ट वन इज विद Pb3O4, second one HgO and third one CuNO3 twice. Complete करो रिएक्शन. Main product is always oxygen. Please. मैं वैसे भी आंसर बताने ही वाली हूँ. खुद ट्राई करो, रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, नो इशू. टेल मी, आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर. दो सेकंड. चल आ जाए यहाँ पे. आ जाए. पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर. पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल योर मेन प्रोडक्ट. हाँ चलो बाद में लिख ले. O2. Now write down the remaining. The oxide, metal oxide. हाँ. इसमें number of electron balance हो रहे हैं. Pb is giving how many electrons? Pb to positive. Okay, next one. Complete हो गया आपका. For first reaction there is little bit doubt. I will cross check it. For second one, for HgO, it is 2HgO giving 2Hg plus O2. Okay. For second one, CuNO3 twice. On decomposition, CuO plus 4NO2 plus O2 gas. 4NO2 plus O2 gas. मैंने O2 gas को upward arrow लगा दो. On decomposition, CuO plus 4NO2 plus O2 gas. O2 gas, oxygen gas is इस पे. हाँ, बिना ट्रायंगल के कैसे रिएक्शन पूरा करोगे? So which liquid there is decomposition? First का नाम O2 plus Pb में क्या है? Just you may remember I have made circle here. First का O2 plus. वो मैं बता दूँगा. First वाले में क्या है? As per the scope, it is Pb plus O2. Let us see confirm. जो भी अब मैंने बताया ना, मैं नेक्स्ट पीरियड में बता दूँगी. आगे देखो. Properties. Identification. How you will identify this gas? Color, odor, smell. कुछ है इसका? Yes, color. Write down there. Colorless. Odor. Odor. No odor. Nature. Acidic, basic, neutral. इसको भी क्या कर सकते हैं? अच्छा ये छोटा है क्या? इसको मैं मारूं. Okay, colorless, odorless, and by nature it is neutral. So whether there will be any action on litmus paper? No. So write down that. Then again we will use property of fire. Whether it
fire or not, it burns or not, it support burning. क्या है property? It support burning. So write down. Rekindles a glowing splinter. Rekindles, R-E-K-I-N-D-L-E-S, underline करो. Rekindles a glowing splinter. Okay, so it support burning, hence it rekindles the glowing splinter. Then next one, next property, again it is very important. Write down the gas absorbed in colorless alkaline solution of pyro के हंसने की जरूरत नहीं है, क्या क्या आ जाएगा तुमको पढ़ने के लिए. PYROGALLOL. In bracket write down it is organic compound. PYROGALLOL. Structure is like this. Benzene ring with 3OH group. It is organic compound. If you want, draw this structure. So gas absorbed in colorless alkaline solution of turns it dark brown. So this is a confirmation test for आपको लास्ट में वापस अरे कैसे समझ में आएगा? देखो समझ में लेना ही नहीं है. मैं बताती हूँ, आगे मत बोलने पता. ये हो जा, चलो. मुझे लगा था वो अशांति फैला. हाँ, कोई जरूरत बात में पढ़ाई. ये देखो पढ़ाई की बात. सब पढ़ाई की बातें चल रही है. और लगता है खत्म नहीं हो गया, आधा हो गया. ओके, कलरलेस पॉइंट चेक करो. कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल, rekindles a burning splinter, and you know what is reason for that. Okay, then last and the important point for the confirmation test of oxygen. This is chemical test and you have to do it in presence of organic compound. Organic compound used here, it is pyrogalol, which is organic. Structure is very easy to remember. Benzene ring with 3OH group. Okay, now when you pass the gas in this alkaline solution of pyrogalol, which is colorless, in presence of oxygen, it will become dark brown. समझ में आया? Alkaline solution का color कौन सा है? Colorless. It is colorless, but when oxygen gas is passed in that solution, it becomes dark. So this is confirmation test for oxygen. Then next one, carbon dioxide. Next one, carbon dioxide. So again, which method can be used for the preparation of carbon dioxide? इससे पहले भी हमने किया है ये, तब मैंने बोला भी था ये तुमको मेथड प्रिपरेशन के लिए यूज करना पड़ेगा. How carbon dioxide can be prepared? Boys, क्या हो गया? पहले वाला नहीं हो गया. क्या हो गया पता? कौन सा वाला? Which one you want? Color the gas. After rekindles a glowing splinter, next write down the gas absorbed. The gas absorbed. बेटा तो आके अपने पहले वाले प्लेस पे बैठ जा. वहाँ पे देखो अच्छा समझता है, सुनाई भी देता है. मुझे बार-बार रिपीट करना है, तूने कुछ नहीं किया. आगे बैठ जा अपने पहले वाले प्लेस पे. The gas absorbed in colorless
alkaline solution of pyrogalol and turn it into dark brown color. उसका पॉइंट रह गया था पूरा. Then third one, carbon dioxide. Okay, so how you can prepare carbon dioxide? Metal bicarbonate with acid. और कोई method है, simple easy method. Can we do it only by decomposition? Decomposition of metal carbonate कर सकते हैं ना, simple method try करेंगे. Right now, metal carbonates on decomposition forms metal oxide and carbon dioxide. Write down reaction with ZnCO3. First is with ZnCO3, second with CuCO3. Decomposition forms. है ना, पढ़ा है ना आपने, करो. Decomposition. Metal carbonate decomposes to form metal oxide and carbon dioxide. Decomposition reaction लिखना है. Just you have to carry out breakdown. Okay? Metal oxide and carbon dioxide. दो product form. First is with ZnCO3 and third is with Cu. जगह देखो मुझे बैठा. जाओ. पीछे वालों को मैं नहीं देख रही हूँ. Do whatever you want. Okay? If you want to complete your notebook, you can complete it. अगर छोड़ना है तो छोड़ दो. But I am not going to repeat the sentence again. Make sure. Next. So with ZnCO3, complete the reaction with ZnCO3. Done. And next with CuCO3. हो गया दोनों का? हाँ. First bench. ZnCO3 वाला आंसर क्या है? Product ZnO plus CO2. And next one is CuCO3. CO plus CO. CuO plus CO2. In both the cases, you are forming metal oxide with carbon dioxide. छोड़ना. Better use. First product is ZnO plus CO2 and second reaction CuO plus CO2. In both the reaction there is formation of carbon dioxide. Remember simple जितना भी reaction है learn it by heart. Okay, next write down CaCO3. Yes, CaCO3 with HCl. Yes. CaCO3. Yes. With HCl. करो खुद लिखो reaction. बैलेंस होना चाहिए reaction. CaCO3 with HCl. Okay. हो गया क्या प्रोडक्ट और बैलेंस करने के लिए 2HCl. ओके, नाउ इन दिस रिएक्शन वी आर यूजिंग HCl. HCl is acid and we are doing it with calcium carbonate. So calcium carbonate here it is slightly basic. Note it down. Slightly basic. Product CO2 plus CaCl2 plus H2O. No, product is CaCl2 plus H2O plus CO2. मैंने गलत. 3 products are there. बोलते रहो. आपने कैसे उल्टा लिख दिया प्रोडक्ट तो सरकार.
It is CO2 plus CaCl2 plus H2O. First thing we will check whatever product you have written is right or wrong. Sequence, again it is your choice, but normally byproducts we are writing at the end of the reaction. Chalo, next one. Again it is preparation reaction NaHCO3 with HCl. NaHCO3 with HCl. Preparation of CO2. NaHCO3 HCl. हो गया प्रोडक्ट NaCl plus third bench NaCl plus H2O plus CO2 gases formed. Now we have written 4 reactions in 4 different types of reaction. In every reaction at the end you have written CO2 in an upward arrow. Correct enough? So these are the simple method of preparation of CO2 gas. Now coming to the identification test. The first one, color होता है colorless. Write down. Odorless. Nature, acidic, basic, neutral. Okay. Nature, acidic, basic, neutral. It is acidic. Write down. और जब आप nature लिख रहे हो ना, immediately write down action on litmus paper. So acidic means blue into red. Blue litmus to red. Then when we pass carbon dioxide in lime water, what change is found? Lime water turns milky. Right now, so write down. Lime water turns milky due to lime water turns milky. Next one, lime water turns milky. Lime water turns milky due to passing of CO2 and that white color PPT. It is of CaCO3. Bracket में करो. CaCO3. Bracket में करना है. Now write down reaction. What is formula of lime water? बेटा इधर हो जा. Corner में आ जा. Sit here. What is formula of lime water? Okay. तू आ जा यहाँ पे. Okay, understood. CaOH twice plus CO2 giving product. अब तो लिखा ना ब्रैकेट में आपने CaCO3 plus. देखो बैलेंस करो रिएक्शन. इसे जो बंद करने बोला है मैंने. बैलेंस इट. Calcium hydroxide plus CO2 giving CO3 plus पूरा करो last page complete it plus H2O अच्छा अच्छा मिलता है प्रोडक्ट क्या है You are writing reaction with lime water. Okay, reaction is in this way.
CaOH twice plus CO2 अब वो घूम फिर के आई ना, तबीयत अच्छा हो गया एक पीरियड में बैठ के. Lime with CO2 product is CaCO3 white PPT plus H2O. This is insoluble white PPT. Due to presence of this there will be milky solution. Milky white तो आप पहले ही बोल रहे हो, turbid solution. But if you dissolve excess of carbon dioxide in this solution, you will get again colorless solution. पूरा white मतलब transparent solution मिलेगा. ये चीज याद रखना. So next step reaction is, but we need to dissolve excess excess of CO2 पास करना पड़ेगा उसमें. Write down पे आ जाए, यहाँ पे corner पे आ जाए. Next one. इसमें आगे कर. With excess of CO2, so write down reaction CaCO3 plus H2O plus CO2 calcium carbonate with water and CO2, but that combination is in excess, giving Ca in bracket H CO3 twice, Ca in bracket H CO3 twice. Now the first step product, it is colorless milky white PPT, but when you dissolve excess of carbon dioxide, it will be soluble and transfer. Okay, I think you have written color, order, nature, litmus paper and lime water test. Test के साथ में reaction. These things you have completed. Next one, next guess. Next guess बहुत बड़ा है, बहुत सारे. Next guess is Cl2, chlorine. Next one is chlorine. So write down oxidizing agent. Oxidizing agent plus concentrated acid. Oxidizing agent with concentrated acid giving salt plus water, plus Cl2 gas. Salt, water and Cl2 gas. Example, complete this reaction with MnO2 and HCl. MnO2 with HCl. I think we have done reaction with MnO2 in HCl topic. MnO2 with HCl. इसको IMP लिख के रखो. Please write down IMP. Mn salt लिख रहे हैं, salt. प्रोडक्ट देखो क्या क्या, water, salt and chlorine. ये तीन प्रोडक्ट आने चाहिए. तो बैलेंस इट प्रॉपर्ली. इसलिए मैंने बोला है ना, सीक्वेंस अगर आप चेंज कर रहे हो, जगह रखो मेन प्रोडक्ट के लिए. हो गया salt, acid, salt, water and Cl2. कौन सा salt मिला है? MnCl2 plus H2O plus Cl2. बैलेंस किया reaction. So balance reaction is this way. First three benches, boys side. You are writing now. तुम लोग तो कुछ बोलते नहीं हो और ये चुप बैठते नहीं. So reaction is MnO2 plus 4HCl giving MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Then after that write down. डिप्रेशन में लिखो, पॉइंट बना के नोट करो उसको.
and Pb3O4 are acting as oxidizing agent. इसमें ये करो MCQ क्वेश्चन रखो MnO2 and Pb3O4 are dash in nature. Options are basic. First option is basic, second acidic, third option neutral, and fourth none of above. You have to identify the nature of MnO2 and Pb3O4. तो आप आइडेंटिफाई करके आंसर पूरा करो, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है. Then let's come for the nature identification test. So Cl2 it is acidic, basic. Let me push you whether it is acidic, basic, neutral. Cl2. It is acidic in nature. Okay. So acidic test, nature, it is immediately followed by which test? Litmus. Write down that test. First bench. Cl2 it is acidic, basic, acidic. इसके बाद में immediately कौन सी टेस्ट करोगे? Litmus paper test. Write down that test. Blue litmus turns red. What about color? Color greenish. पूरा तो करो. Greenish क्या? Yellow. It is greenish yellow in color. Order. It is pungent. Pungent order. Then chemical tests are given. First one आपने litmus paper test सीखा है ना? ये आपने नगर में अच्छा बंद कर अपने चाहिए ना यहाँ पे आ जाओ. You come here. अक्षरा ठंडी लग रही है. फैन बंद करो. मुझे भी आ जाओ. वो सिस्टम ऑन करने के लिए अगेन आई हैव टू कॉल हिम. इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स. इसलिए रहने दो. जो ऑन है ऑफ है जैसा है वैसा चलने दो. चलो नेक्स्ट. विद लिटमस पेपर एज इट इज एसिडिक इन नेचर वो शांति नहीं बैठेगा. By the way, he is not behaving like this in UT, in school. He is very normal. Okay, so acidic in nature. Followed that you have written litmus paper test. Write down reaction for that litmus paper test. Cl2 with H2O giving HCl plus HOCl. Write down reaction. It is there in your book. मैंने बना के नहीं लाया. नाम कहीं से मैंने देखा है. Cl2 with H2O giving HCl plus HOCl. Now after that write down HOCl giving HCl plus nascent oxygen. Okay, कर लिया पूरा.
इसका नाम मैंने ऐसे कुछ बना होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड क्लोरीन क्लोराइड हो गया रिएक्शन वो करके नाइट्रेट का कुछ रिएक्शन कर रहे हैं ये मेरा नाइट्रिक एसिड का मैंने रिएक्शन करता है मैंने लिया ही नहीं है करेंगे अगर you are disturbed then see I am there from there I am observing everything nitric acid then class whether I have given nitric acid in any of the reaction ऑक्सीजन डाइवैलेंट ये डाइवैलेंट बैलेंस इज इम्पोर्टेंट चलो नेक्स्ट ये खान पाकिस्तान बेटा उठा तो आसे why don't ask me you take your notebook and come here hey इसका नाम क्या है खान पठान बेटा नहीं वो चलो उठो हमारा टेस्ट चेंज करना है वैसे सॉरी से मुझे बहुत परेशानी आती है आई डोंट लाइक सॉरी बोल पे छोड़ना यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट सॉरी ए बेटा उठ चलिए आप उसको उठा पिलर वाले hold your not there हाँ बेटा अच्छे हो आप एकदम अच्छे हो कुछ नहीं बोलना चुपचाप बैठो हाँ ओके गर्ल्स नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पंचर litmus paper test then choking order लिखो वहाँ पे हाथ में आराम करो देखा है दिया दिया ये भाई मेरा लिख के बैठ गया सबको सिट प्रॉपर्ली sharp pungent choking order ऐसे सेंटेंस फर्स्ट बेंच आरुष पाटिल ऑडिबल हूँ ना मैं मुझे ऑडिबल मत होना खाली sharp pungent and choking order then when it is fast or when it is treated with silver nitrate solution पहले उसको लो हाँ then white PPT of AgCl are formed so write down that when fast in silver nitrate chlorine radical का test when fast in silver nitrate solution it forms white PPT of precipitation of AgCl white precipitation of AgCl
Done. सिल्वर AgN पता है? AgN हो गया. Next one. Body white halogen present ClBrI. Depending on the distinguishing test, which one it is present? White, yellow, white, pink colors. Okay. Next test: moist starch iodine paper. Moist starch iodine paper turns blue black. In presence of chlorine, starch, iodine paper, it turns blue black. Reaction is Cl2 plus 2Ki, Cl2 plus 2Ki giving 2KCl plus I2 plus I2 iodine. I do वो बार मैंने डॉक्टर के इसने एड़ा मत कर हाँ KCl plus I2 जिसको सुनाई नहीं दिया इसके लिए हंसना है. Next one in bracket write down starch plus I2 होगा सुनेगा. Repeat करो starch plus I2 giving blue black color. Blue black color. Then next one HCl. Next one HCl. हाँ. This is number कौन सा? Fifth number. Okay. Fifth number. First write down method of preparation. अभी just हमने एक method start किया है ना. NaCl plus H2SO4. Right now. Volatile salt of acid. याद आया? Complete that reaction. NaCl plus H2SO4. It's again decomposition reaction. Then next one KCl with H2SO4. KCl with H2SO4. NaSO3 plus इससे पहले ही हमने किया रिएक्शन. NaH सेकंड बैच दिखाई दे रहा है मुझे. NaHSO4 plus HCl done. Then second one, second balance करो उसको second वाले को. नहीं मैं नहीं बोलूँगी मैं सबका ये भी बोलूँगा. तुझे आवाज नहीं आया तो वो क्या बोलेंगे? Possible ही नहीं है. NaH plus. Right now we have done this reaction in sulfuric acid also. Very absent. When there. No, I so. हो गया? KCl with H2SO4. First bench, second bench from both the side. KCl with H2SO4. Done. Answer. Balance करके बोलो. गड़बड़ मत करना. Balance करके बोलो. बस balance reaction नहीं है. टोटल आंसर. हाँ. Answer. KHSO4 plus HCl. Then write down properties. First one color. ये हमने उधर भी किया था. Under HCl topic. Color, colorless. Write down. Then order. Pungent, pungent. Nature. Acidic. Okay. Next क्या करना पता है ना आपको? Litmus paper test.
first turns red, right? Then next one. Now from chemical reaction, write down forms dense white fumes. Forms dense white fumes when glass rod deep in ammonia solution is kept near hydrochloric acid vapors. Hydrochloric acid vapors. So these vapors, they are thin, but when glass rod dipped in ammonia or ammonium hydroxide solution, they become dense white. Okay. Next line, write down reaction ammonia with HCl. बोलो. Reaction पूरा करो बस. Completed reaction. Dense white means when glass rod dipped then ammonia solution is kept near HCl. Reaction ammonia with HCl. NH3 with HCl. Completed reaction. Boys, first, second bench. NH3 with HCl. लिख लो ना. Product. Second bench. NH4Cl. Ammonium chloride is formed. Which will form dense white fumes. Bracket में लिख के रखो. Dense white fumes. Again, this reaction is repeated twice. जो 2 बार 3 बार हो गई है reaction, you have to focus it up. Then next one. Write down it forms 30 white precipitation with silver nitrate solution. 30 white precipitation with silver nitrate solution. Silver nitrate solution. What is formula of silver nitrate? AgNO3. Write down reaction. AgNO3 with HCl. AgNO3 with HCl giving HCl3 plus HCl3 plus AgCl. आप लिखो reaction HNO3 plus AgCl. PPT downward direction. AgCl which is 30 white PPT. नहीं कुछ नहीं. 1:1 proportion. Both are in 1:1 proportion. AgCl 30 white PPT downward arrow plus nitric acid HNO3. Then write down the precipitate of AgCl are soluble in third bench. Precipitation of AgCl are soluble in NH4OH but insoluble in dilute nitric acid, dilute HNO3. उसको स्टार बनाओ. ये रिएक्शन पूछ सकते हैं. There are high chances. Precipitate of AgCl are soluble in ammonium hydroxide but insoluble in dilute nitric acid. Then next one. Write down reaction. Why it is soluble, insoluble? That reaction you are writing now. AgCl plus 2NH4OH. 2NH4OH. Done. कहीं करके बैठा है. AgCl plus 2NH4OH giving, show arrow, giving NH3 is in bracket 2 times Cl plus 2H2O
Name of this compound is diamine. दो बार NH3 है ना, diamine silver chloride, and this is soluble salt. So diamine silver chloride is formed, which is soluble, but in dilute nitric acid. Diamine silver chloride. अभी तो बोला नाम लिखा है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? डायमाइन. Amine is NH3 is 2 times silver and Cl. फॉर्मूला तो मैंने पहले बताया, बाद में नाम बताया. AgNH3 twice Cl plus 2H2O. Then next one. Color, nature, litmus action, method of preparation, reaction. So how chlorine, this one HCl gas can be identified? Chemical reaction. First one, HCl I am asking. पॉपअप साउंड मत करना. अरे फाउंटेन वाला हमको नहीं चाहिए, वो लिटमस के लिए ही है फाउंटेन वाला. तो लिटमस पेपर एसिड का वैसे भी कर रहे हैं ना, यहाँ पे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं. Okay, so what are the tests for the identification of HCl? Litmus paper, simple test. Then after that chemical test. With ammonia it forms dense white fumes. Then with silver nitrate, fortified PPT. This PPT are soluble in. किया है ना? अभी किया हमने. They are soluble in NH3. NH4OH, वो liquid ammonia है, and insoluble in HNO3. Boys, first 3 bench. तुमको इतना आवाज बंद करके पूरा ही बैठ गए, तो रिएक्शन लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? Okay. Next Monday we don't have class because of Diwali vacation. So after that, उसमें clapping वाला कोई बात नहीं, आपको हमको दिया जाएगा. लेकिन उसके बाद में जब कभी क्लास होगा ना, wait. Boys, यहाँ पे second bench. Sitting arrangement मैं करूँगी या फिर तो मेरे मन से नहीं बैठूँगा. Next take down SO2. Next one, girls. Next one. SO2 kind of preparation. Preparation from metallic sulfide. HIT with dilute HCl. Second bench, metallic sulfide with dilute HCl or H2SO4. Is either HCl or H2SO4 can be used dilute wala, giving salt plus water plus SO2. Salt, 3 products are formed: salt, water and SO2 gas. We are studying preparation of SO2. Next one, reaction. Complete this reaction. First is Na2SO3 with HCl. Second, Na2SO3 with HCl. Second, Na2SO3 with H2SO4. This is with sulfide, and third is with bisulfide, hydrogen sulfide, which we say NaHSO3 with H2. First is Na2SO3 with HCl. Second, again Na2SO3 but with H2SO4. And third one is
Which is this method of writing. Keep that paper on bench. Now write it properly. Mention नहीं हो रहा है. You are not comfortable here. हाँ. Do your. हो गया boys? Completed all three. Girls, done. NaHSO3. First bench, second bench, boys side. Second bench. Second bench पर जो दीवार के पास में blue T-shirt. Answer for first one. Na2SO3 plus 2HCl. Balance करके बताओ मुझे. हाँ मैम बैलेंस किया है. हाँ ओके. Na2SO plus 2HCl forms 2NaCl plus H2O plus SO2. Okay, next one. आप मुझे लेफ्ट में उसको बोलो नेक्स्ट रिएक्शन बताने. Na2SO3 plus H2SO4 equals Na2SO4 plus H2O plus SO2. Next one. Next one. Now NaHSO4 plus H2O plus SO2. Third one, उसे second करना है. हाँ तो Na2SO4 plus H2O plus SO2. और second one. Third one. Next one, green T-shirt. Green T-shirt. Third reaction with NaHSO3. Done by the third or the green one? हाँ? नहीं किया third one. Third one आपने नहीं किया. Next one, pink T-shirt. Okay, how long it will take? Guys, third one with NaHSO3 with H2SO4, 2NaHSO3 with 1 H2SO4. Product is Na2SO4 plus 2H2O plus SO2. Done. Next class we will see identification. Happy vacation. पूरे